गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर सरफ सफाई कर्मचारी। सोशल इश्यूज गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएस के जो है उसको जो है अब एक न्यू चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर ऑन बोर्ड मिल चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं ये 4 मेंबर्स, लेकिन फिर भी अभी भी उनकी पोस्ट वेकेंट है। तो ये होता क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंडीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है। नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। इनिशियली तो इसको स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया था, लेकिन जो इसका पर्टिकुलर एक्ट है वो 2004 से जो है वो एक्सपायर हो चुका है, इसलिए अब ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी की तरह काम कर रहा है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? वेलफेयर देखना सफाई कर्मचारीज़ के, गवर्नमेंट के अगर कोई वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं इनसे रिलेटेड तो उसको इवैल्यूएट करना, कोई भी स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है रिपोर्ट देना। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के इम्प्लीमेंटेशन को ये मॉनिटर करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमको ऑफ कोर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिमूव करना है और इम्प्लीमेंट करनी है सफाई कर्मचारीज़ के लिए, उसके लिए ये जो है बॉडी को बनाया गया है। अब चैलेंजेस क्या हैं ये भी देख लेते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं होती है क्योंकि ये नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, सिर्फ ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकती हैं, कोई प्रपोजल जो है उसको मनवा नहीं सकती। इसके चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते हैं। कमीशन मोस्टली अंडर स्टाफ्ड रहता है और टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहा है, इसलिए जो है इसके पास कोई पर्टिकुलर पावर्स जो हैं वो ऑर्डर या डायरेक्शन देने की नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनेगी जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो अपना कैंपस खोलने वाली है। डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है 266 रैंक पर आती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से जो है वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पर स्टार्ट कर देंगी। अब आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में लाने का और उनको कोर्स चलाने का जो है वो थ्रू गिफ्ट सिटी जो है वो एक गोल रखा था। अक्टूबर 2022 में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ऑफशोर कैंपसेस एट गिफ्ट सिटी लगाने का जो है परमिशन भी मिल गया। अब जो है गिफ्ट सिटी में आईएफएससी जो है इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, उनके द्वारा ये रेगुलेशंस फ्रेम की गई हैं, जो कि खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक यूनिफाइड रेगुलेटर की तरह काम करेगा इस सारी जो है वो कैंपस की रेगुलेशंस को देखने में। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्म्स हैं क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो टॉप 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं वो इंडिया में अपना जो है वो कैंपस लगा सकते हैं, गिफ्ट सिटी में खासकर। और जो भी उनके बैरियर्स थे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में एस्टेब्लिश होने के, वो रिमूव करने के लिए जो है वो नॉर्म्स निकाले गए हैं, जैसे कि उनको रिपैट्रिएशन अलाउड है, जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जो फॉरेन एंटिटी है उनके कोर्स वही होने चाहिए जो अपनी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में वो चला रहे हैं। आईएफएससी जो है उनके पास राइट होगा कि वो इंस्पेक्ट कर सकेंगे फॉरेन कैंपसेस को जो कि गिफ्ट सिटी में बनाई जाएंगी। क्यों लाने की ज़रूरत है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में? क्योंकि लगभग 4.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो साल 2022 में अब्रॉड गए पढ़ने, जिससे कि लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का इंडिया को जो है वो आउटफ्लो हुआ। अब लगभग 40 मिलियन जो है वो हायर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं इंडिया में, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा पाएंगे अगर फॉरेन कैंपसेस इंडिया में ही सेटअप हो जाएं तो। अब गिफ्ट सिटी क्या है? एक प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि साबरमती रिवर के बैंक्स पर बनाई गई है। इसमें जो है मल्टी सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं। एक सिटी फॉर्मेट में बनाई गई एक ग्लोबल सिटी है जो कि फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट की तरफ काम करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एमआईटी के रिसर्चर्स ने एक ऑगमेंटेड रियलिटी का हेडसेट बनाया है XAR नाम से, जिससे यूजर्स हिडन ऑब्जेक्ट्स एक इनसाइड बॉक्स जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? एनहांस्ड वर्जन होता है रियल फिजिकल वर्ल्ड का, जिसमें क्या होता है कि आपके रियल इन्वायरमेंट में, जैसे आप पार्क में घूम रहे हो तो उसी में ही आपको डिजिटल कंटेंट के थ्रू जो है आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे।
उसमें क्या होता है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में सुपर इम्पोज किया जाता है, ठीक है। अब डिजिटल फिजिकल वर्ल्ड्स को जो है वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करना एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर हम वर्चुअल रियलिटी से इसको हम कंपेयर करें, वर्चुअल रियलिटी तो आपको पता ही है, एक सिमुलेटेड 3D एनवायरनमेंट बना के देता है, जिससे कि यूज़र जो है वो हेलमेट्स या गॉगल्स पहनकर जो है वर्चुअल रियलिटी का जो है वो फैसिलिटी को इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रायसीना डायलॉग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली बताया है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगी रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग एक जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। 2016 से न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में देखें तो 1990 में ये एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीसन थिंक टैंक बनाया गया था, और ये नॉन पार्टीसन इंडिपेंडेंट वेल रिसर्च एनालिसिस और इनपुट देता है डिसीजन मेकर्स इन द गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टॉमाहॉक मिसाइल सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि जापान जो है वो 400 टॉमाहॉक मिसाइल जो है वो यूएस से खरीदेगा। अमेरिकन मेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसको शिप या सबमरीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। बहुत ही कम लैटिट्यूड पर ये फ्लाई कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 2400 किलोमीटर होती है, और इसको जो है एक फाइटर प्लेन की तरह जो है ट्विस्ट और टर्न भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हिंदुस्तान 228-201 LW एयरक्राफ्ट। तो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव कर दिया है एक न्यू वेरिएंट ऑफ हिंदुस्तान 228-201 LW एयरक्राफ्ट, जो कि HAL ने बनाया है। अब इसका वेट जो है वो 5695 kgs होगा। 19 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी होगी इसकी। इसको सब 5700 kg एयरक्राफ्ट कैटेगरी में डाला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी पायलट क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। अब इसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी, क्योंकि इसको 5700 kg से कम के कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, JO201 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली एक इमेज कैप्चर की है JO201 एक जेलीफिश गैलेक्सी की, और ये जेलीफिश गैलेक्सी जो है वो लगभग 700 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, ठीक है। अब जेलीफिश गैलेक्सीज क्या होती हैं, इनके लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं या टेल्स होती हैं गैस की, डस्ट की या स्टार्स की, और ये टेंटिकल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि ये गैलेक्सीज बहुत ही तेज़ी से मूव करती हैं, तो पीछे जो इनकी टेल्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो इनके टेंड्रिल्स होते हैं जो गैलेक्सीज के, ये गैलेक्सी के कोर से बहुत ही लंबे दूर तक बनते जा रहे होते हैं। अगर हम गैलेक्सी क्लस्टर्स की बात करें तो गैलेक्सी क्लस्टर्स जो हैं वो आपस में जो है वो जुड़ी हुई बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, आपस एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से जुड़ी रहती हैं, और इसमें बहुत सारी यूनिवर्स की बहुत सारी बिगेस्ट गैलेक्सीज जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हायाबुसा 2 मिशन साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल जो है वो देखे हैं उन सैंपल्स में से जिसको हायाबुसा 2 एक्सप्लोरर लेकर आया है, ठीक है। जापानीज स्पेसक्राफ्ट था हायाबुसा 2 मिशन, और वो एस्टेरॉयड ryugu पर गया था, और सबसे पहली बार इसने किसी एस्टेरॉयड पर जो है वो रोवर डिप्लॉय किया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा और उसके ओरिजिन को जो है वो और एवोल्यूशन को देखेगा, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा। जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया था एस्टेरॉयड ryugu पर, और इसका एक्सटेंडेड मिशन है अभी एक और आगे स्मॉल एस्टेरॉयड 1998 KY 26 के पास भी जा रहा है, ठीक है। जापान का ओरिजिनल हायाबुसा जो मिशन था वो 2010 में लॉन्च किया गया था, उसी का ही ये फॉलो अप मिशन रहा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली मिराज 2000 फाइटर्स जो है वो डिस्पैच कर दिए हैं, क्योंकि वो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज यूके में जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोबरा वॉरियर एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसको यूके कंडक्ट कर रहा है विद एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए और सिंगापुर, ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम देखें कि हम इंडिया कौन कौन सी और एक्सरसाइज करता है यूके के साथ, तो कोंकण शक्ति और अजय वॉरियर जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो और इन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल जो है वो असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है। बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल बोडोलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट के सपोर्ट से। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसमें थॉट लीडर्स, एजुकेटर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, आपस में डिस्कशन कर पाएंगे और नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट कर पाएंगे। और इसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है ताकि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो एनहांस किया जा सके। अब इसी के साथ हम देखते हैं बोडो पीस अकॉर्ड्स क्या थे। बोडो ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2020 में ये अकॉर्ड साइन किए थे, जिसमें न्यू मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग और गवर्नेंस असम के 6 शेड्यूल एरियाज में जो है वो दी गई। ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी, इनको बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया। 40 से बढ़ाकर 60 यहाँ पर जो है वो सीट्स कर दी गई बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। मोर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स दी गई इनको। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बोडो कचारी ऑटोनॉमस काउंसिल भी बनाई जाएगी। हिल ट्राइब स्टेटस भी दिया गया बोडोज़ को, जो हिल एरियाज़ में रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस भी बोडोज़ को दिया गया। और जो डिप्टी कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो बीटीसी अथॉरिटी के साथ ही कंसल्टेशन करने के बाद जो है आपके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Commission for Safai Karamcharis. This topic is important for your social issues and governance both. So recently the National Commission for Safai Karamcharis have got a chairperson, a vice chairperson and members on board. So of course an office order has been released by Ministry of Social Justice and Empowerment, but still the post of 4 members remain vacant. So what is NCSK? It is an institution to investigate the conditions of Safai Karamcharis in India. It is a non-statutory body currently functioning under the auspices of Ministry of Social Justice and Empowerment, and initially it was set up as a statutory body, but the act under which it was formed ceased to have effect from February 2004, and the tenure of NCSK has been extended now as a non-statutory body. What are the functions of it? So of course they look after the welfare of Safai Karamcharis, they evaluate the existing welfare programs for them, and also they investigate specific grievances of them. So they are also assigned the work to monitor the implementation of Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act of 2013. What is the need of this organization, or what is the need of this body? So government has been taking many steps for the upliftment of Safai Karamcharis, but of course we still need a body to evaluate those responses. Manual scavenging may have been eradicated, but sporadic instances do occur. So for that, NCSK evaluates the situation and makes recommendation to the government accordingly. But what are the challenges which are faced by this body? It does not have any powers because it is a non-statutory body. The chairperson and members of it are mostly political appointees. This commission mostly remains understaffed, and it is also running itself on a temporary basis because it is not having any statutory status. So the next topic is foreign universities in India. This topic is important for your governance and economy section both. Australia's Deakin University will become the first foreign university which will enter India through an independent campus in Gujarat's Gift City. Deccan University is ranked 266th in QS World University Rankings, and it is expected to start operations from next year. You know that the Union Finance Minister in her budget speech announced that the world-class foreign universities and institutions would be permitted to offer courses in Gift City. So in 2022 October, the IFSCA announced regulations regarding foreign universities who can set up offshore campuses in Gift City. So IFSCA will be a regulator
and it will have the capacity, and it will have the power to regulate these universities in the gift city. So what are the norms which have been outlined? An educational institution from the top 500 QS world universities will be allowed to set up campus in this gift city. And the problems that they were having earlier, like they were not allowed to repatriate any profit, now they will be allowed to do so without any restriction. So most of the problems which foreign universities were having in India while setting up the campus in India have been addressed now. The courses of or programs that they would have to offer must be identical to those that are offered by their parent entity in their home jurisdiction. IFSC IFSCA will also have the right to inspect foreign campuses to set up in gift city. So, what is the need of allowing these foreign universities in India? Of course, over 4.5 lakh Indian students went abroad last year, and it led to outflow of almost 28 to 30 billion dollars out of the country. So, almost 40 million students are pursuing higher education in India. So, this will have this allowing foreign universities to set up campus in India will allow them to have access to global quality education. What is Gift City? You know that it is a planned business district in the state of Gujarat. It is the first operational greenfield smart city located on the banks of Sabarmati River. It is also having a dedicated multi-services special economic zone, and the aim of Gift City is to ensure fast-track development and implementation. And it is the Gift City is made in a city format to present itself as an image of a global city. So the next topic is augmented reality. This topic is important for your science and tech section. So MIT researchers have recently built an augmented reality headset called XAR, which allows users to see hidden objects inside a box or under a pile. So what is augmented reality? It is an enhanced version of the real physical world. It can overlay digital content into a real life environment and objects. So what would happen here in augmented reality is that you are superimposing digital information into real world objects to create a 3D experience. So it is basically a combination of digital and physical worlds, interactions made in real time, and accurate 3D identification. As compared to virtual reality is just a stimulated 3D environment, and it allows the users to explore and interact with a virtual surrounding using devices like helmets and goggles. So the next topic is Raisina dialogue. This topic is important for our international relations. So Ministry of External Affairs has recently announced that Iranian Prime Minister Giorgia Meloni would be the chief guest at Raisina dialogue, which is a conference on geopolitics and geoeconomics. It is being held annually since 2016 in New Delhi. This dialogue is structured as a multi-stakeholder cross-sectoral discussion involving heads of state, cabinet ministers, and local government officials. It is organized by Observer Research Foundation in partnership with the Ministry of External Affairs of India. What is Observer Research Foundation? Was established in 1990 as an independent, non-partisan think tank which conducts policy research on good governance. It provides non-partisan, independent, well-researched analysis and inputs to decision makers in governments. So the next topic is Tomahawk missile. This topic is important for your security section. So Japanese Prime Minister has recently said that Japan will purchase 400 Tomahawk missiles from the US, and it is an American-made long-range cruise missile which can be launched from a ship or a submarine. It is advantageous because it can fly at extremely low altitudes at high subsonic speeds, and it has a range of almost 2400 kilometers. Like fighter plane, it has the capability to twist and turn like a radar evading plane. So the next topic is Hindustan 28201 LW aircraft. This topic is important for our economy section. So Directorate General of Civil Aviation has recently approved a new variant of Hindustan 228201 LW aircraft, which has been developed by HAL. So its maximum takeoff weight will be 5695 kgs with 19 passenger seating capacity. So now the aircraft would fall in sub 5700 kg aircraft category, which means that there will be produced pilot qualification requirements and reduced training requirements, because now it will be under the sub 5700 kg aircraft category now. So the next topic is
JO201. This topic is important for your science and tech section. So Hubble Space Telescope has recently captured an image of JO201, which is a jellyfish galaxy in the Abel 85 galaxy cluster. So this JO201 is at a distance of about 700 million light years from the Earth. And what are jellyfish galaxies? So basically they have long tentacles or tails which are made of gas, dust and stars. They are formed because the galaxy moves rapidly. These tails or tendrils of jellyfish galaxies extend much beyond the bright disk of the galaxy's core. So, what are galaxy clusters? They are they are largest objects in the universe because they are home to the biggest galaxies in the known universe, and they are held together by their own gravity. So the next topic is Hayabusa 2 mission. This topic is important for your science and tech section. So scientists at NASA, they have recently discovered life-forming molecules from the samples which have been returned by Hayabusa 2 Explorer. So it is a Japanese spacecraft which has Hayabusa 2 is a Japanese spacecraft which has studied asteroid Ryugu, and it was the first to deploy rovers to operate on an asteroid. So what are the objectives of this mission? So Hayabusa 2 was launched to study or clarify the origin and evolution of the solar system and to establish deep space exploration. So it was launched by Japan Aerospace Exploration Agency in December 2014 as a follow-up mission of Hayabusa 1, which was launched in 2010. So it arrived at asteroid Ryugu in June 2018, and it sent the samples back to Earth in December 2020. So Hayabusa 2, of course, like I've told you, is an extended. It has also gone on an extended mission to another asteroid named 1998 KY26. So the next topic is exercise Cobra Warrior. This topic is important for your security section. India has recently dispatched Mirage 2000 fighters to participate in the Cobra Warrior exercise in the UK. It is a multilateral exercise which is being conducted by UK, in which air forces of India, Finland, Sweden, South Africa, USA and Singapore are also participating. So Indian Air Force is also participating, and if we look at other exercises that India conducts with UK, then these are the two Konkan Shakti, which is a tri-services exercise, and Ajay Warrior, which is an army exercise. So the next topic is Bodoland International Knowledge Festival. This topic is important for your governance section. So first, Bodoland International Knowledge Festival has recently begun and in Assam's Kokrajhar district. So what is this festival? It is hosted by Bodoland University in support from the Bodoland Territorial Region government, and it aims to provide a platform for thought leaders, educators, research scholars, practitioners, and researchers to engage with each other and to create, foster, and promote knowledge exchange. It will also aim to draw the best practices from the world to enhance scientific temperament in light of the Bodo Peace Accords, which were signed in 2020. So what are the Bodo Peace Accords? These accords were signed by representatives of Bodo organization with the central and Assam governments. So it presents a new model of power sharing and governance in Assam under the 6th schedule of the constitution. So borderland territorial area districts, namely Kokrajhar, Chirang, Baksa and Udalguri, will be renamed as have been renamed as Bodoland Territorial Region, and the number of seats in the Bodoland Territorial Council have been increased from 40 to 60 now. More legislative, executive, and financial powers have been given to the BTC, that is the Bodoland Territorial Council. And Assam government has also set up this Bodo Kachari Autonomous Council, which will be a satellite council for the development of Bodo villages outside the Bodoland territorial region. So Indian government also will expedite the process of granting hill tribe status to Bodos living in hill areas, and scheduled tribe status to Bodos will also be given. Apart from that, deputy commissioners and superintendents of police will be appointed in the BTC only after consultation from the BTC authority. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.